अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मोहम्मद हमज़ा फ्रॉम क्रिएटिव सॉल्यूशंस। जैसा कि आपको पता है कि हम एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी हैं, तो आज हम डिजिटल मार्केटिंग के हवाले से बेशक नहीं, डिजिटल ट्रेंड्स के बारे में बात करना चाहेंगे जो कि इस साल को प्रिवेल करेंगे। टुडे इज़ द 6th डे ऑफ द ईयर, सो मैं समझता हूँ कि ये ज़रूरी चीज़ है कि हम थोड़ा सा कुछ ऐसे टॉपिक्स के बारे में बात करें जो कि 2020 में डिजिटल मार्केटिंग स्पेस को डोमिनेट करेंगे। तो आइए चलते हैं अपने 5 ट्रेंड्स की तरफ। Assalamu alaikum everyone. Today we'll be talking about the top trends in digital marketing which no one can ignore in 2020. First, of course, is artificial intelligence. What is artificial intelligence? जैसा कि नाम itself बताता है कि this is machine learning. Artificial intelligence basically meaning कि खुद ही intelligence increase हो जाती है artificially, गैर फितरी तरीके से मशीन की, इंटरनेट स्पेस की, just to put it in the simplest of the terms. Already we can see it in many services, for example, e-commerce transactions, recommendations, emails, and etc. So I will explain to you some examples as well. Microsoft and Uber use Nightscope K5 robots to patrol the parking lots and large outdoor areas in various countries now to predict and prevent crimes. The robots can not only read license plates and report suspicious activity, they can also collect data to report to their owners. प्रोग्मेटिक एडवर्टाइजिंग। अब प्रोग्मेटिक एडवर्टाइजिंग क्या है? बेसिकली एआई को यूज़ करके जो ऐड बाय करने हैं आपने, उसको कहते हैं प्रोग्मेटिक एडवर्टाइजिंग। मीनिंग कि आपको कस्टमर की एक्विजिशन कॉस्ट कम पड़ेगी। मिसाल के तौर पे रियल टाइम बिडिंग इज़ एन एग्जांपल ऑफ प्रोग्मेटिक एडवर्टाइजिंग विच सेव्स नॉट ओनली टाइम बट ऑल्सो कॉस्ट एज वेल। थर्ड आर चैटबॉट्स। अब चैटबॉट्स क्या हैं? जब आप किसी वेबसाइट पे जाते हैं तब आपको चैटबॉट्स मिलते हैं जो आपके साथ कन्वर्सेशंस करते हैं। दोज आर चैटबॉट्स. Chatbots are also going to be a major trend in digital marketing in 2020. The biggest benefits, the two biggest benefits being 24-hour customer service and of course instant messages, instant basically replies to your inquiries. Any inquiry that you go and put in a website, the chatbot replies it to you instantly. Fourth is video marketing. ऑडियो विजुअल मार्केटिंग आज के दौर में बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये इंगेजिंग है. इट इज़ स्टिमुलेटिंग टू योर आइज़ एंड सेंसेस. जैसे जैसे आपने देखा है रिसेंट टाइम्स में आपके पास टाइम कम बचा है आजकल के दौर में, उसी तरह प्रिंट मीडिया डेड हो चुका है. इसलिए ऑडियो विजुअल मार्केटिंग, वीडियो मार्केटिंग इज़ द न्यू ट्रेंड एज वेल. 70% ऑफ कस्टमर्स से दैट दे हैव शेयर्ड अ ब्रांड्स वीडियो. These all stats basically go on to explain that video marketing is very important. How 52% of companies have said that not only their purchase have increased after video ads, but also customers have reported that it is easier for them to trust a brand or a company's product based on the video that is on their with the Facebook page or website. So video marketing, audiovisual marketing is the fourth trend in 2020 for the digital marketing services. And the last topic for today is influencer marketing. What is an influencer? Who is an influencer? जो कि किसी को भी किसी बात पे कन्विंस कर सके. तो वर्ड इटसेल्फ आपको बता रहा है इन्फ्लुएंसर. तो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग इज़ बेसिकली अ टाइप ऑफ एंडोर्समेंट. जब आपको किसी वेल नोन सेलिब्रिटी से या जो कोई यूट्यूब स्टार्स आजकल हैं, इंस्टाग्राम स्टार्स हैं, उनसे एक एंडोर्समेंट मिलेगी कि यार मैंने ये प्रोडक्ट यूज़ किया था, इसमें ये मुझे अच्छी चीज़ें लगी और ये इसके प्राइस के हवाले से या कंपेटिटर्स के हवाले से बेनिफिट है, तो यू विल बी मोर इंक्लाइन टू ट्रस्ट दैट पर्सन. क्यों? क्योंकि उसके कोई लाखों में या एटलीस्ट हज़ारों में फॉलोअर्स हैं, वेदर ऑन ट्विटर और उसको सोशल मीडिया किसी भी और पे, लिंक्डइन पे आप देख लीजिए. सो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग इज़ द फिफ्थ टॉपिक दैट आई वुड लाइक टू टॉक टुडे फॉर द लेटेस्ट ट्रेंड्स दैट विल बी डोमिनेटिंग इन डिजिटल मार्केटिंग इन 2020. So this was today's shoot for top trends for digital marketing in 2020. I hope आप लोगों को कुछ पसंद आए होंगे. अगर कोई आपकी क्वेरीज होंगी तो आप हमें ज़रूर बता सकते हैं, हम आपको डिटेल में भी एक्सप्लेन कर सकते हैं. But that was it for today and inshallah we will meet for the next 5 trends in the digital marketing for this year. Thank you.